in such a manner that it just touches the circle, right? So any vector that will come on this line will be called as the tangent. So a vector, an acceleration which is along a radial direction will be called as the radial acceleration. An acceleration which is on the tangential line will be called as tangential acceleration. Okay, everyone, something of this sort. So have a look at this. So maybe when your body is here, this is the circle O. Okay, so at this point you see AC is a vector which is pointing towards the center. So that's basically a radial vector. Okay, and AT that you see is pointing along the velocity direction. That's your tangential acceleration. Okay, this vector that you see is your radial acceleration, and a vector that will be drawn here will be the tangential acceleration, AT. So if I trace both of them, okay, the direction of radius and the direction of tangent will always make an angle of 90 degrees, because the radial direction is actually the normal direction, and it is always perpendicular to the tangent. Tangent and normal is something that you guys are aware about, right? Everyone, are the directions of radial and tangential acceleration clear? The direction, everyone in the chat box, clear, right? Okay, thank you. Yes, thank you so much. Chiranjeevi, you are writing unnecessary thing right now. You don't have to. Okay, thank you. So everyone, we have defined before few slides the correlation between omega r and v. Means when we were speaking about this particular part, we visualized how v, omega and r are related. So we will come back to that part. The reason being, we know that when we want to define acceleration, the linear acceleration is actually differentiation of linear velocity. So we basically want to differentiate this. So when we want to differentiate this, we definitely want to differentiate omega cross r, because omega cross r is linear velocity. And you see two vectors, they are getting multiplied. Okay, so see, this is very interesting. So first I will try to keep omega outside, cross, and I will differentiate r. Omega constant, r ka differentiation happened, plus. Now differentiate omega and r remains unchanged. Do you guys get the way differentiation is done? Straightforward now. U into v type of differentiation. Okay, cool, thank you. Okay, yes. Okay, Chiranjeevi, don't spam. So everyone, now is the very important part. What is d omega by dt? Once again, what is d omega by dt? What is d omega by dt? That's angular acceleration, alpha. So it is alpha cross r. This is alpha cross r. But what is dr by dt? Is your radius changing in magnitude? No. But is it changing in direction as the body moves? Definitely. It changes the direction. You see that. This is r. After some time, this is r. Guys, can I say that the rate at which radius vector is changing, the rate means how fast the radius vector is changing, is how fast the velocity vector is changing. Because velocity and radius are actually together. This is how they are changing. Getting? My finger. Look at this. My finger is velocity. You see, they are actually moving together. Getting? So the rate at which r is changing is nothing but velocity. Dimensionally, dr by dt is velocity. So this is omega cross v. No, not rate of change of velocity. It is velocity. The rate at which r is changing, the velocity is actually being defined by that. Okay? Hannah, sorry. If the body is here, this is your r vector. If the body comes here, can I say that this is also r vector? But both radius vectors are actually different in terms of direction. Correct? So when we try to write down delta r by delta t, this is actually trying to tell you how much the velocity, how much the displacement or r vector has changed. So let me draw these two vectors at a bigger diagram. Look at these two vectors. This is r1, this is r2. Everyone, this is r1, this is r2. And can I say that if I trace the vector which is starting from here and ending here, look at this. You see a triangle being formed, everyone? Triangle is being formed. As of now, I'm calling it the displacement vector. Isn't it the displacement vector when the body goes from A to B? This is the displacement vector. And by the triangle law, the head of r1 and the tail of s vector are at the same position. So can I say r1 vector plus s vector is equal to r2 vector? Correct? Bring r1 to the left hand side. S vector is r2 minus r1. Getting it? What is r2 minus r1? Can I say that is change in r vector only? That is change in r vector. And what is s vector? Is that the displacement vector? And we know that velocity ka direction and displacement ka direction will be same. So my dear students, this is also the direction of velocity. So that is why delta r by delta t is the rate at which displacement is changing. This is s vector by delta t, and that is velocity vector. Abhi aaya samajh mein? Okay. Vihan, I have given the clarity here. Follow this one. Okay. Cool. Awesome. Chalo. Abhi. Aditya, wait a minute. I'm not done yet, everyone. Now is the time to focus. Yes, derivation is not important. Listen to me. Let's try to understand which of these two vectors is tangential acceleration and which of these two vectors is radial acceleration. So सबसे पहले alpha cross r की बात करते हैं. Everyone, let's first speak about alpha cross r. Okay. So pay attention what I'm trying to do now. This is the circle. Body is going in anti-clockwise manner maybe, and we know that this is going to be the direction of alpha, assuming angular velocity is increasing. Okay, everyone, and maybe the body is here. Okay, the body is here at this point, P. So I need to define its radial vector. Okay, so people, this is r vector, and you need to talk about alpha cross r. Is that a direction which is going into the plane of the vector, into the plane of the paper? Is alpha cross r? For that, the thumb is pointing inside at this position, right? Good, very good. Let's come to point Q. Let's come to point Q. Everyone, this time do alpha cross r at Q. Is it coming towards you? Is that coming towards you? Right? Achha, let's see if you guys are able to figure this out also. I'm talking about this point. Let's call that point S, and this is my r vector. It's a three-dimensional diagram, everyone. So tell me if you are getting the direction of their cross product as this tangential direction. Are we getting the tangential direction like this? Right? अब मैं इसे top से दिखा देता हूँ. I'll show you this from the top. Okay, everyone. I'll show this to you from the top. This is how the body is moving.
So alpha is towards you already. Alpha is towards you. You're looking at it from the top. Okay, and this is where your body at point P is. So everyone, imagine a vector that is coming towards you, and try to rotate it towards R vector. Try to rotate it towards R vector. What is the direction that you are getting? You should be getting a direction that is this vector. This is the top view. This is the top view. Okay. If I talk about point S, then the direction of alpha cross R is this. Okay, everyone. And can I call this as the tangential direction? Can I call it the tangential direction? Right. So what will you say alpha cross R is? The radial or tangential? But obvious, this is tangential acceleration. Okay, everyone, this is tangential acceleration. And by the way, this comes into existence because alpha came into existence. Means what? D omega by dt, if it is non-zero, then only. If d omega by dt is non-zero, then only alpha comes into existence. When the body's angular velocity is changing. Okay, and when will the angular velocity change? When your linear velocity is changing. When the body is trying to speed up. When your ceiling fan tries to speed up, its linear speed is increasing, its angular speed is increasing, and then only it will have an angular acceleration. So everyone, can I say that if this is my tangential acceleration, is it also the direction of the linear velocity of the body when the body is moving? This is also the direction of its linear velocity, right? Which means what? Tangential acceleration is responsible to increase or decrease the speed of the body, not velocity, the speed of the body. Means what? Body wants to speed up, body wants to slow down. The acceleration which will be responsible for doing that will be tangential acceleration, because body's velocity is along tangential direction, always. So your tangential acceleration is practically dv by dt. Look at this, only the magnitude of v, only the magnitude. This is only speed, not velocity, speed. It's not responsible to change the direction. It's not responsible for changing the direction. It is only responsible to change the speed, to increase it, to decrease it. If I want a body which is moving, just imagine, if you want to increase the speed of the fan, you will have to hit it. You will have to hit it in the tangential direction. You will have to hit the blades of the fan in the tangential direction. If you will hit it in the radial direction, it will not speed up. You will have to actually hit it in the tangential direction. I don't know. You might have heard about this in villages. गांव में बच्चे वो टायर चलाते हैं. That's a very crude example to give you guys, right? Fidget spinner, yes, fidget spinner is the latest example. You have to give it a tangential force. You have to apply a tangential force. You have to apply a tangential acceleration in order to speed it up. So that's basically the tangential acceleration. Getting it? हाँ, fan को उल्टा भी घुमा सकते हो, पर बार-बार तुम्हें करना पड़ेगा वो. Force तुम्हें लगाना पड़ेगा. Okay, everyone. So remember, this is alpha into r, the direction, and it is also d. ये बहुत सारे लोग भूल जाते हैं. Many students forget this dv by dt part. People only remember alpha r or alpha cross r. But remember, it is also dv by dt. Okay? अभी आया नहीं, रेडियल हुआ नहीं अभी तक, आ रहा है. ठीक है? अब आते हैं रेडियल डायरेक्शन पे, everyone. अब आते हैं रेडियल डायरेक्शन पे. ओमेगा क्रॉस v का डायरेक्शन. So guys, ओमेगा क्रॉस v का डायरेक्शन चेक करते हैं सभी. Okay? So people, this is our circle, and maybe body is here. Maybe the body is here. A vector which is going in. This is the velocity. This is angular velocity. Okay? So I'm bringing angular velocity here, and I have a vector which is going in. I can't show it on the diagram right now. It's very difficult for me to show. Okay, let's write at some other location so that maybe you will be able to figure this out, everyone. So I'm taking this as my velocity at this position. This is my velocity vector. Try to look at it from three-dimensional perspective. Okay, and angular velocity direction remains the same. This is v vector. So I'm bringing omega vector and I'm putting it above velocity. I'm putting my omega velocity, omega direction here. So everyone, try omega cross r. Try omega cross r, and tell me if that comes out to be this direction, which is pointing towards the center. Try this, everyone. Is this happening? Try here also. So just diametrically opposite. This is v. And this is omega. Three-dimensionally, you have to try. So you will find that this time it will point here. Getting? Getting towards the center always. This is omega. This is v. And the red vector is AC. The vector, the acceleration that acts always towards the center. Also known as, I'm sure you know the name. You guys know this. It's called centripetal force, centripetal acceleration, coming from centripetal force, and precisely centripetal because it is acting towards the center. No matter where the body is, the acceleration is always acting towards the center. And if you people also remember this from childhood, this is called necessary acceleration. This is called necessary acceleration for the circular path. The word necessary because without this acceleration, circular motion is not possible. For any body to move in a circular path, this acceleration has to be there. इसके बिना circular motion नहीं होता. और ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? वो भी समझो. Pay attention, everyone. Switching off the chat so that we focus here. Why this is necessary? Why this is inevitable? Because it is coming from omega cross v. Why it is called necessary? Because it is coming from omega cross v. And how this v came into existence, let's go back there. You people remember this explanation? You people remember how this v came? It came because of dr by dt. And I told you, r ka magnitude is not changing, its direction is changing. Guys, can I say that when a body is moving in a circle, its radius vector has to change the direction at all the instants? When the body is moving in a circle, its radius vector has to change its direction at all the instants. Can I say that? That is inevitable. It is unavoidable. When a body is moving in a circle, its radius has to continuously change the direction, not magnitude, direction. And because that is unavoidable, because that is what is required for a body to move in a circle, that is why the acceleration that comes in the picture because of that change in the direction is necessary, is compulsory. And hence, it is called as centripetal or radial acceleration. Both are the same things. Okay? Exactly. बाद में बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल के बारे में भी. ठीक है? सेंट्रीफ्यूगल के बारे में अभी मत सोचो. कुछ भी टेंशन नहीं है. Okay? अगर सिर्फ टेंजेंशियल होगा और सिर्फ लीनियर मोशन होगा तो सर्कुलर मोशन ही नहीं कहलाएगा. ठीक है? Everyone, now look at the other forms of this formula. Centripetal acceleration is omega into v. And we know that omega can be, or rather v can be written as omega into r. V को हम लिख सकते हैं omega into r. याद है? Correct? So this becomes omega cross r. Also, from here only, if you try to write
if you try to write omega as v by r, then the formula also becomes v square by r. अच्छा तुम सबने ये पढ़ लिया क्या केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया? केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर हो चुके हाँ, तो वहां पे ना you guys must have been told in Bohr's atomic model that the necessary centripetal force is provided by the attractive force between electron and nucleus, right? तो वहां लिखा जाता है k z e square by r square as mv square by r. याद है mv square by r वहां लिखा होगा पहली बार. So this right hand side force is centripetal force. So what it tells you that when an electron tries to revolve in the atom, the attractive force from the nucleus behaves as centripetal force. Okay everyone. So remember one very important thing, अभी तो ये टॉपिक आया भी नहीं है. The centripetal force is not a fundamental force. Okay, stop writing anything in the doubt section now. Centripetal force, which is going to be mass into centripetal acceleration, or simply mv square by r, the formula which I just now showed you guys. यही formula में mass से multiply किया. When you multiply this by mass, you get the value of centripetal force. I'm giving you a trailer of the next class basically, or next class maybe. Different forces in different situations will behave like centripetal force. There is nothing called as centripetal force as a fundamental force. We know only three fundamental forces: gravitational force, electromagnetic force, nuclear force. In the chapter of laws of motion, we talked about the three fundamental forces. Centripetal force is not a fundamental force. Means it does not exist as one of the forces. No, different forces in different situations will behave as centripetal force. I'll just count the situations where different forces will behave as this. Already Bohr's atomic model. It's the electrostatic force of attraction between electron and the nucleus that behaves as centripetal force. How moon revolves around Earth, how satellite revolves around Earth is because of gravitational pull of Earth for the moon, for the satellites. That behaves as centripetal force. We will study that in after 2-3 chapters in gravitation. Apart from that, the dryer of the washing machine. Have you guys ever seen the clothes after washing machine is done drying? कभी washing machine को देखा है when it is done drying, the dryer stops. Clothes are found on the walls of the dryer. जो तुम्हारी washing machine होती है ना, कपड़े उसके wall पे मिलते हैं हमेशा. कभी भी बीच में नहीं मिलते. So then it is basically the normal force which is provided by the wall of the dryer that behaves as the centripetal force. It's basically the walls, the normal force provided to the cloth behaves as the centripetal force. Also. सबने डेथ वेल का नाम सुना है? डेथ वेल, मौत का कुआं. In that death well, the person who's performing the stunt has to be always on the wall. He has to be in contact with the wall. So the normal force provided by the wall behaves as the centripetal force. So your clothes in the dryer of the washing machine and the death well doing person actually are doing the similar thing. Your clothes are actually doing death well when they are inside the dryers of the washing machine. Okay. Cool. Banking of the road वगैरह अभी बहुत unrelatable है, इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ उसके बारे में, but these are situations. ठीक है, everyone understood? So this is your tangential acceleration. Stop typing anything now. Switching off the chat. Everyone, this is your tangential acceleration, and this is your radial acceleration. If you want to find out the net acceleration, remember centripetal acceleration is necessary. Tangential acceleration is not always necessary. That means what? For tangential acceleration to come into picture, omega must change, v must change, speed must change. The body must speed up or slow down. If the body is moving with constant angular velocity, like the fan right now, at this moment the fan is moving with a constant angular velocity, there is no tangential acceleration. You don't require any tangential force. But centripetal acceleration is always there. Okay, it is always trying to make sure that the body is moving in the circle. This acceleration will always be there, the one which is acting towards the center. Okay, everyone. So when both of them are present, AC and AT, then the net acceleration of the body is the resultant of both of them. A will be AC square plus AT square. As simple as that. Because both AC and AT are perpendicular to each other. Okay, let's have a look at some example to get a better clarity of understanding of this thing. Like this one, it says that a particle is performing circular motion of 1 meter radius. Its speed is 2t square meters per second. Speed is also not constant. That means tangential acceleration will be there because speed is not constant. So what will be the magnitude of acceleration at t equal to 1 second? Very good. So let's try to find out the tangential acceleration first, which is dv by dt. So differentiate 2t square, that will come out to be 4t. And at t equal to 1 second, this comes out to be 4 into 1. That means 4 meter per second square. Now, the velocity at t equal to 1 second will be how much? Put t equal to 1 here. So velocity ka value comes out to be 2 into 1 ka square. That is 2 meter per second. Why am I finding that? Because it will help me calculate AC. AC is v square by r. So velocity is 2, square that, the radius is 1. So this also comes out to be 4 meter per second. So overall acceleration, as I said, will be the resultant of AC and AT. AC square plus AT square, because both of them are perpendicular. So 4 square plus 4 square in under root will come out to be 16 plus 16 under root 32. That is 4 root 2 meter per second square. Okay, everyone? Do we understand this? All of you? First we found AT, then we found AC. Okay? Good. Awesome. One more example. A cyclist is riding with a velocity of 18 km per hour. So it is km per hour. I'll have to convert it into meter per second. So 5 by 18 se multiply karoge. 5 meter per second is the velocity. Okay. As he approaches a circular turn on the road of radius 25 root 2, he applies the brake and definitely speed will change. And if speed changes, tangential acceleration will also come into picture. So he reduces his speed at a rate of 0.5 meters per second every second. That means the tangential acceleration is actually not tangential acceleration, but it is retardation. He's slowing down. So it is minus 0.5 meter per second per second. That means meter per second square. This is another confusing way of talking about acceleration. Meter per second per second. That is meter per second square. Okay. Then we have to find out AC, and for AC I require v square by r. So v is 5. So 5 ka square, radius is 25 root 2. So this is 25 by 25 root 2. So this is 1 by root 2 meters per second square. And this is minus 1 by 2 meter per second square. So overall acceleration, you have 1 by root 2 minus 1 by 2. Overall 1 by root 2 square plus 1 by 2 square, that is 1 by 2 plus 1 by 4. Overall it will be under root 3 by 4 or root 3 by 2. That's the answer that we get. Is this also clear, everyone? Do we understand this? Cool. Ready for a quiz? Quickly. Replay बिल्कुल देख लेना. Okay. Good. अगर doubt है तो मुझसे क्लास के एंड में पूछना. A DVD disc has a diameter of 12 centimeters. I hope your generation knows what a DVD is.
because you guys are the USB generation. So anyway, diameter is given. So diameter is 12. So radius is 6 centimeter, and the rotation period, okay, capital T is given as 0.1 second. You have to determine the speed of the outer edge. That means you have to talk about V equal to omega r value is 6 centimeter. T is given. So find omega, put that here, find out the value of V. Giving you people 2 minutes, and your time starts in 3, 2, and 1. Quick, 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 quick. 1 minute is gone. Last 20 seconds now. Last 10, come on. This time was given not for concept, but for calculations. If you use a calculator, then you guys are actually not worthy of this question. Okay. Okay. Good. So we have this. See the answer. Radius is given. We find out V as this is omega into r. Omega is 2 pi by t. I can show it here only. This is 2 pi by capital T into r. So that will become 2 pi r by t. Put up the value. It will come out to be 3.77. Okay. This will be your homework question. Obviously, the correct answer is there only. But I want you people to sincerely try this. Okay, everyone. This is your homework question connecting with the previous problem only. So you have to just find out the centripetal acceleration when you have already found the value of omega. Okay. Sorry, V has already been found. Here is your leaderboard, everyone. Congratulations to all those who are here in the leaderboard. If you want to take a screenshot, please take it, because this is the only time when I will be showing this leaderboard, and I'm removing the leaderboard in next 5, 4, 3, 2, 1, half, and gone. Okay. Okay, this is new. चलो बहुत बढ़िया. And the other one also. ये आवाज मुझे तो आती नहीं है. Okay. And the last one. इसके बिना तुम लोग पीछे नहीं छोड़ते हो. Okay. So officially the class is done. हाँ एक और चीज रह गई. ये लो everybody, the test syllabus is here. Okay. 15th August 9 a.m. full syllabus test, I would say. Okay. I have actually no idea how many number of questions, but definitely MCQ types. Definitely MCQ. Okay. Circular motion will be not there. So honestly, I don't know which pattern. I do not know which pattern. Okay. हाँ दिलराज. Good evening. एक मिनट. Yes guys, officially the class is done. Those who want to leave can leave. Okay. I think 3 hours का test है. I don't know. जितनी information मेरे पास है वो मैंने share कर दी है. ठीक है. All of you be prepared for 3 hours. हाँ, you said which slide, दिलराज? 42. Yeah. हाँ. So this is the side view, and this is the top view. Okay. Do you understand cross product? तो अगर अल्फा वेक्टर को आर वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, ये जो वेक्टर है उसको आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लो फॉर पोजीशन पी, तो तुम्हारा थंब जो है वो अंदर की तरफ जा रहा होगा, है ना. उसी को ऊपर से देखोगे तो ऐसा कुछ दिख रहा है, वो वेक्टर 80 है, वो अंदर की तरफ जा रहा है. यही पॉइंट क्यू पे अगर चेक करोगे तो अब अल्फा क्रॉस आर बाहर की तरफ आने वाला वेक्टर है ना. वही चीज एस पे चेक करोगे तो ये टेंजेंशियल वाला डायरेक्शन है, तो हर जगह टेंजेंशियल, लेकिन पी और क्यू क्योंकि वो वेक्टर अंदर और बाहर जा रहा है, इसलिए वो डायरेक्शन समझ नहीं आता उतना अच्छे से, तो इसलिए टॉप व्यू देखना पड़ता है. Got it? क्योंकि उसका डायरेक्शन टेंजेंशियल आ रहा है, उसीलिए उसे डिफाइन किया हम लोगों ने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. अल्फा क्रॉस आर इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. Doesn't we found it from here. When you differentiate omega and keep r constant, then you get d omega by dt cross r, and d omega by dt is alpha, angular acceleration. The value of alpha into r is defined as tangential acceleration. Okay. हाँ सिद्धार्थ.
पहले ये बताओ, हाउ विल इट बेनिफिट द अदर क्लासमेट्स? मेरे चेहरे पे इरिटेशन समझ में आ रहा है? सीधा क्वेश्चन पूछा करो, इधर उधर की ब्रेड और बटर मत लगाया करो क्वेश्चन में। गेटिंग? मैं ऐसे भी अनम्यूट करता हूँ किसी को जिसको डाउट होता है। आई डोंट लाइक द ब्रेड एंड बटर लेफ्ट एंड राइट ऑफ द क्वेश्चन। अरे 10 मिनट लगने दो, मैं कभी भी टाइम बाउंड डाउट्स नहीं लेता। मेरी क्लास हर बार 10:40 के पास जाती है। 10 o'clock ऑफिशियली आई कैन एंड द क्लास बाय द वे, बट आई डू नॉट लाइक दिस लेफ्ट एंड राइट बटरिंग ऑफ द क्वेश्चन, दैट इट विल बेनिफिट द एंटायर क्लास। रिमेंबर दिस, Siddharth and everyone else. Okay? Can I have a yes or no from you? Yes. Now ask me your question once again. Repeat the question. At rest for 10 seconds. Wait a minute. Hmm. Hmm. पूछा क्या है? फोर्स पता लगाने बोला है। हाँ, और चारों ऑप्शन में फोर्स ही है या कुछ और भी है? ठीक है, अभी रुक जाओ, ऑप्शन मत बताना मुझे। तो पहले एक्सेलरेशन पता लगाऊंगा। S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज करूंगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा बिकॉज यू सेड फोर्स इज कांस्टेंट। ठीक, तो बॉडी का कितना डिस्प्लेसमेंट बताया है? 250। इनिशियल वेलोसिटी 0, दिस इज हाफ इनटू a इनटू 10 सेकंड्स का स्क्वायर। ओके, सो दिस कम्स आउट टू बी 500 बाय 100, a इज इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन 0.9, दैट इज 9 बाय 10 इनटू 5, 4.5 न्यूटन इज द आंसर। बोलिए कौन सी इक्वेशन? v इक्वल टू u प्लस 80। बताओ क्या किया इसमें? कितना आया? कैसे आया? क्या? वो कब लगता है पता है? ये इक्वेशन कब लगती है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तुम्हें बेनिफिट हो रहा है, बाकियों को पता है। व्हाटएवर, इससे बेनिफिट तुम्हें हुआ, डू नॉट पुट द लेवल ऑफ एंटायर क्लास। दैट इज व्हाट आई एम नॉट लाइकिंग अबाउट इट। ये क्वेश्चन तुम बिना इस बटन के पूछ रहे हो, मैं बहुत प्यार से बताता तुम्हें। हो गया? ओके सर, एनी आइडिया व्हेन विल स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर बी डिस्कस्ड? मैंने यार मीटिंग में बहुत बार बोल दिया, तो उन्होंने बोला अभी बच्चों को बोलो इसकी टेंशन ना ले। ठीक है ना? हाउ टू कोरिलेट सर्कुलर मोशन विद कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव एक्सटर्नल फोर्सेस? Siddharth, so as of now, though we have not even spoken about the forces on the circular motion part, that is something which we'll discuss in second and third lecture. But again, depending upon which situation of circular motion you are studying, if you are studying Neil Bohr's atomic model, the force which is acting over there is force between electron and nucleus, and that force is electrostatic force, and that is conservative force. But if we'll speak about a body which is moving, a car which is moving on a flat road and trying to take a turn, there we will see that it is force of friction which behaves as the centripetal force. And makes the body move in the circle. So we'll say that it is non-conservative force. So the non-conservative and conservative forces remain the same; they don't change. किसको? हाँ 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 हाँ, एक टाइम के बाद में it achieves the uniform velocity. बिल्कुल पॉसिबल है। अगर तुम्हें याद हो तो जब हम काइनेमैटिक्स पढ़ते थे, तो वहाँ पे एक ग्राफ आता था, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा तुम्हें, तत्व में भी मिल जाएगा, जहाँ पे बोला होगा कि बॉडी जो है वो रेस्ट से मूव करना शुरू करती है, और थोड़ी देर के बाद में जब उसकी वेलोसिटी बढ़ के एक सर्टेन वैल्यू तक आ जाती है, उसके बाद में वो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करती है, और फिर थोड़ी देर चलने के बाद में ब्रेक लगा देते हैं तो रुक जाती है। तो एक्जैक्टली ये जो O to A है वो एक्सेलरेटेड मोशन है, A to B है यूनिफॉर्म मोशन, और B to C है रिटार्डेड मोशन। दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यही चीज एंगुलर एक्सेलरेशन के केस में भी बन सकती है। ये एंगुलर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ हो गया। तो अब मैं बोलूंगा कि अगर फ्लो पता लगाया तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, अगर एरिया पता लगाया तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, बट दैट विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो सिर्फ रिप्रेजेंट किया है, वो सिर्फ रिप्रेजेंट किया है, वो हमारे को समझ में आए इसके लिए रखा है वो डायरेक्शन। बिल्कुल जरूरी नहीं है ना कि पॉटर जब भी पॉट बनाते हैं तो उसकी हाइट बड़ी ही बढ़े, तो कभी कभी उसको वेट भी बड़ा करता है। तो उसको कोरिलेट करते हुए उसको विजुअलाइज करने के लिए यूज करें तो ठीक है, बट वो उसका उसका रिजल्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है? Okay. विहान, यू हैव टू वेट। सर एंग्री ऑन मी? क्यों भाई? व्हाई? व्हाई वुड आई बी एंग्री ऑन यू? देन आई मस्ट बी एंग्री ऑन यू। यस डेफिनेटली आई वाज। ओके ऑल गुड अदरवाइज? ओके सर अनम्यूट मी। आई विल, लेट मी फर्स्ट अनम्यूट शिवांश, देन आई विल अनम्यूट निखिल। यस शिवांश। यस शिवांश, टेल मी क्या समझ में आया? व्हिच पार्ट डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? अच्छा, आर यू एबल टू सी दैट इट्स अ 3 डायमेंशनल डायग्राम, इट्स अ 3D थिंग? ये बात समझ में आती है? विजुअलाइज ही कराया हुआ है सामने एक्चुअली। मींस सोचो यहाँ पे एक सर्कल है, ये एक सर्कल है यहाँ पे, ऐसा सोचो। एक मिनट, फुल स्क्रीन पे आऊंगा तो दिखेगा तुम्हें? ठीक है, कमिंग फुल स्क्रीन। सो सी दिस इज अ सर्कल, ठीक है, और इस पे ये है उसकी एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन, कहीं पे भी परपेंडिकुलर होगा बेसिकली, पर हम इसको स्टेबल करना, एंड दिस इज द डायरेक्शन
of the angular velocity, sorry, linear velocity as the body is moving. बॉडी ऐसे ऐसे मूव कर रही है, तो मान लो जब बॉडी यहाँ पे है तो ये उसका लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ठीक है, और ये उसका एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन है ऊपर की तरफ सर्कल से परपेंडिकुलर। तो मैं उसको यहाँ ले आता हूँ और आई विल ट्राई कि वो तुम्हें दिखाई दे, इसके लिए इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। सो दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, इसको यहाँ मूव किया मैंने। सो दिस इज व्हाट इज राइट नाउ द सिचुएशन, ओके। तो मुझे इस वेक्टर को इस वेक्टर की तरफ रोटेट करना है, आई हैव टू डू दिस। सो ये मेरा सेंस ऑफ रोटेशन है, ये रोटेट होगा, तो माय थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि सेंटर वहां पे है। यही चीज यहाँ ट्राई कर लो, अब बॉडी घूम के जब आएगी तो वेलोसिटी मेरी तरफ आ गई। अब ये जो पिंक वेक्टर को ऑरेंज की तरफ रोटेट करो, ऐसे ये रोटेशन होगा। सो व्हेन दिस रोटेशन विल हैपन, थंब इज पॉइंटिंग नाउ दिस साइड एंड दैट इज आल्सो द डायरेक्शन ऑफ सेंटर, गेटिंग? सो एवरी टाइम व्हेनेवर यू विल डू दिस, यू विल फाइंड दैट द वेक्टर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। इट्स कॉल्ड द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। एकदम से नहीं होगा, एकदम से नहीं होगा, रोकना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल वैसे ही जब हम बॉडी को ऊपर देखते हैं तो ऊपर जाके उसे रोकना पड़ता है नीचे आने के लिए। एंड फंडामेंटली फॉर एनी ऑब्जेक्ट टू मेक अ 180 डिग्री टर्न वेक्टोरियली 180 डिग्री टर्न लेने के लिए उस वेक्टर को 0 होना ही पड़ेगा, तब जाके वो दूसरा टर्न पॉसिबल है या दूसरे डायरेक्शन में आना पॉसिबल है। इसलिए एंगुलर वेलोसिटी अगर ऐसी थी तो उसे पहले 0 होना पड़ेगा और फिर वो पीछे की तरफ चली जाएगी। सडनली नहीं होगा, सडनली नहीं होगा, भले वो इंस्टेंट बहुत छोटा हो जिसमें उसे रोका, लेकिन वो इंस्टेंट होगा जरूर, वो एग्जिस्ट जरूर करेगा, ठीक है। थैंक यू। ओके अंश, वेट फॉर सम टाइम, हैना वेट फॉर सम टाइम। निखिल कहां गया? निखिल आर यू देयर? बाय हर्षिता। निखिल आर यू देयर? हाँ यस निखिल। 4 कॉमा लास्ट क्या बोला? 4 कॉमा, हाँ ओके। वर्क पूछा है क्या? तो यार ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट पता लगाओगे r2 - r1, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर कैसे लिखूंगा? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ये हुआ r1 वेक्टर, और r2 वेक्टर क्या हुआ? 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, बस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? r2 - r1, आज भी बताया ये तो। हाँ तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है? तो 30i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये उसका वेक्टर हो गया, 30i कैप प्लस 30j कैप प्लस 30k कैप, दैट्स इट। ये है, मेरे को तो क्वेश्चन सॉल्व होने से मतलब ना। तो ये r2 - r1 करते हैं, 2i कैप माइनस 0j कैप या प्लस 0j कैप प्लस k कैप, ये है अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। और 30i कैप 30j कैप 30k कैप, तो वर्क डन क्या आ जाएगा? 30 * 2 60, 1 * 0 सॉरी 30 * 0 0 एंड 30 * 1 30, 90 जूल्स इज द आंसर। क्या करेक्ट आंसर? 30 जूल्स दिया है। ये क्वेश्चन कहाँ का है? तत्व का है, तत्व में आंसर क्या दिया? 30√2 जूल्स, 30√3 जूल्स दिया है, और फोर्स 30 न्यूटन एक्टिंग अलोंग i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप बोला है, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर्स दिए ही हैं, कोऑर्डिनेट्स 2 3 1 एंड 4 3 2, बैलेंस आंसर इज 90 जूल्स। करेक्शन होगा तत्व में, 90 जूल्स इज द आंसर, 90 जूल्स इज द आंसर, करेक्शन इन तत्व। 30 into √3 बोला हुआ है ना, वो गलत अप्रोच है, वो करेक्शन मतलब वो अप्रोच ही करेक्ट नहीं है, ठीक है। अपना आंसर 90 जूल्स है, वो करेक्ट है, ठीक है, ओके। Ansh, we are yet to study this concept. This is studied in the next chapter called as collision. Maybe this question might be there in work power energy exercise, but this involves concept of collision, which we have not studied yet, which we will study in center of mass and collision. Ansh, doesn't matter, twice, thrice, 4 times. This question is done in after learning the concept of center of mass and collision. Okay, so relax, relax a bit. Sir, can you prove that the work done by tension in a pulley is zero? Yes, anyone can prove it now. So when we speak about a pulley and the force of tension is actually trying to act on two bodies. Good question, by the way, Sudeep. Thank you for asking it. So Sudeep, you'll have to participate with me. Hannah, you will be unmuted after this. Sudeep, तो यार सुदीप, क्या मैं बोल सकता हूँ टेंशन का डायरेक्शन दोनों ही बॉडी से ऊपर लगेगा, ठीक है ना, नॉर्मली अपवर्ड, हाँ ठीक है। अब इन दोनों में से एक बॉडी को नीचे और एक को ऊपर जाना पड़ेगा, ये तो श्योर है। अगर ये बॉडी मान लो एक्स अमाउंट से नीचे जाती है तो इस बॉडी को एक्स अमाउंट से ऊपर आना पड़ेगा। So if I calculate the work done for this t into x into cos of, tell me the angle for body 1, perfect, and for body number 2 t into x into cos of 180 degree. So this is t into x into 1 plus t into x into minus 1. Can I say it is equal to 0? Okay, क्या ये वही उसी चीज का मैथमेटिकल प्रूफ दिया है, that it is an internal force, that's why the work done is 0. तुम माइक से कितना किलोमीटर दूर हो?
तो थोड़ा पास आ जाओ। और एक तो तुम्हारे रूम में इतना एको है कि आधी बात तो मुझे 2-3 बार सुनाई दे रही है। हाँ, अभी बोलो। हाँ, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें ये पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है। तो मे बी अगर कुछ फील्ड फोर्स वाला डाउट है तो वो अभी अपने फील्ड फोर्सेस देखे ही नहीं है, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स अगर कभी-कभी 0 नहीं होते, तो वो इंटरनल फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे। वो इंटरनल फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे। जैसे अगर मान लो, हाँ, एक एग्जांपल भी आ रहा है मुझे ध्यान में। जैसे सोचो हमारे पास में एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक के ऊपर 2 ब्लॉक्स और रखे हैं, ठीक है? एंड यहाँ पे अगर मान लो दोनों ही ब्लॉक्स मूव करते हैं और फ्रिक्शन भी है, तो इस पूरे सिस्टम की जो ओवरऑल एनर्जी है वो डिक्रीज ही होगी जब ये दोनों ब्लॉक्स मूव करेंगे ऊपर वाले। है वो इंटरनल फोर्सेस सिस्टम के? क्या? एक बॉक्स हाइट से फॉल करता है। हाँ, अर्थ के। हाँ, हाँ, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होती। टोटल मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होती। यहाँ टोटल वर्क डन इज 0। और अदर आई शुड से दैट जितना वर्क बॉडी पे हो रहा है उतना ही वर्क अर्थ पे भी होता है, तो ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड। जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। वर्क डन इज स्टिल 0, यू कैन से दैट। एक्चुअली टू एन एक्सटेंट जो तुम बोल रहे हो रियलिस्टिकली उसको बोल सकते हैं कि हाँ वर्क डन 0 नहीं है, क्योंकि हम अज्यूम कर लेंगे कि मोशन ऑफ द अर्थ इज ऑलमोस्ट 0। उस सेंस में बोल सकते हैं। लेकिन अगर यही एग्जांपल मून और अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस होगा, मून और अर्थ के ठीक है, योर एग्जांपल इज राइट, यस योर एग्जांपल इज राइट, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस नॉन 0 इन दिस केस। ठीक है, सो एक्चुअली वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज 0। ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर सकते हैं कि जहां जहां पे सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी इन्वॉल्व है, जहां जहां सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी इन्वॉल्व है, देयर इज नो चेंज हैपनिंग इन द एनर्जी इन द फॉर्म, देयर इज नो कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हैपनिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड और लाइट, वहां पे वैलिड है। क्या चीज? हीट में बदल जाएगी एग्जैक्टली, जो सामने डायग्राम है उसमें फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, ओके। सिद्धार्थ सरकार, do you think every student who asks the doubt says that sir my doubt will help others also? But do you not think that when they ask the doubt it helps others any which way? So converse is always true in this case. You don't have to imply it. It is always true. When somebody is going to ask a doubt in the class, it is definitely going to benefit at least one more person. Get my point? कि मुझे क्यों बुरा लगा? है ना? Are you there? है ना? और बाकी के मेरे दोस्त विहान भी है। चलो विहान को म्यूट करते हैं। है ना? Are you there? Yes, विहान. Yes, yes, yes. इतनी फॉर्मेलिटीज क्यों करते हो लोग? आज तो मेरा डिनर भी हो गया 8 बजे। बोलो। सो सॉरी, केप्ट यू वेटिंग। बोलो बोलो, फिर तो फटाफट पूछो। नहीं समझ में आया क्या? दिस इज एक्चुअली द केस विद 90% ऑफ द क्लास। भले वो हाँ नहीं बोल रहे होंगे इस बात पे। सर्कुलर मोशन इज द फर्स्ट चैप्टर जहां से फिजिक्स में होराइजन ब्रॉड करने की जरूरत पड़ने लग जाती है। मतलब अब तुम्हें वो विजुअलाइज करना है जो आज तक स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा था, उसको घुमा के देखने का एंगल है। तो धीरे 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 सर्कुलर मोशन में वो एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं व्हिच इज मोर बेस्ड ऑन विजुअलाइजेशन, जिसमें हम खुद की तरह विजुअलाइज कर पाते हैं, उस कैपेबिलिटी आ जाती है बात। तो क्योंकि जिस तरह से हमने डायरेक्शन ऑफ थीटा ओमेगा एंड अल्फा डिफाइन किया है, वो अपने आप में कन्वेंशन है। वो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स नहीं होती कभी भी। वेक्टर्स हमेशा जिस डायरेक्शन में होती है क्वांटिटी उस डायरेक्शन में दिखाई जाती है ना। एंड दिस वाज ट्रू टिल दिस टाइम। इस चैप्टर से पहले तक वो ट्रू भी था, लेकिन अब बहुत स्मार्टली हमने एक ऐसा डायरेक्शन डिफाइन कर दिया है व्हिच इज द ओनली डायरेक्शन व्हिच इज अनचेंज्ड ड्यूरिंग अ सर्कुलर पाथ। तो इसलिए वहां से थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न आना शुरू होते हैं। बट अगर वो वाला पॉइंट समझ में आता है डायरेक्शन वाला, और ये कोरिलेट कर पाते हैं कि सर्कुलर मोशन में दो ही पॉसिबिलिटी है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। और इसको अगर हम स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करने की कोशिश करें तो स्ट्रेट लाइन में भी दो ही पॉसिबिलिटीज थी, या तो गोइंग फॉरवर्ड या गोइंग बैकवर्ड। तो उससे कोरिलेट करने की कोशिश करनी है, बट एक्जैक्टली रेप्लिकेट नहीं कर सकते दोनों को विजुअलाइज करते समय। वेक्टोरियली एकदम सेम है। वेक्टर्स की जो कैलकुलस है ना, वेक्टर्स की जो अलजेब्रा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल वैसी है, लेकिन मोशन का विजुअलाइजेशन बहुत अलग है फिजिकली। ना ना, ये धीरे धीरे होगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई आज से 3 महीने बाद सर्कुलर मोशन एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। अगर सही स्पीड पे इसके प्रॉब्लम सॉल्व किए तो विदिन अ वीक एकदम परफेक्ट भी हो जाएगा। एक्सरसाइज 1 इजी है, वर्क पर एनर्जी की होनी चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे 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 करते जाओ, होते जाएंगे, टेंशन मत लो। हम्म, अननोन है यूनिवर्स में। तो अगर मैं उसको वैसे लेके चलूं, वैसे तो आज हमने डायनामिक्स का डिस्कशन किया नहीं है। डायनामिक्स का मतलब है फोर्स का डिस्कशन। आज सिर्फ काइनेमैटिक्स का डिस्कशन हुआ है सर। तो वैसे देखा जाए तो किसी भी बॉडी पे जब फोर्स लगते हैं सर्कुलर मोशन में भी, तो बॉडी पे फोर्स तो तुम कहीं भी लगा सकते हो।
बॉडी जिस भी तरह से खड़ी है उस पर कहीं भी फोर्स लगाया जा सकता है, लेकिन जब हम फोर्स को रिजॉल्व करते हैं तो दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे, एक टेंजेंशियल टू द पाथ और एक परपेंडिकुलर टू द पाथ। तो एक डायरेक्शन सेंटर की तरफ आने वाला है और एक डायरेक्शन टेंजेंट की तरफ आने वाला है। इन दो कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग दो एक्सेलरेशन डिफाइन किए हमने। मैं बेसिकली स्टोरी बना रहा हूं तुम्हें, वी विल एक्चुअली लीड टू दैट पार्ट। अभी मैं उल्टा लेके चल रहा हूं कि फोर्स है, फोर्स एक्ट कर रहा है और बॉडी पे शायद एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, ये वाला फोर्स, और उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक एसी और एक एटी, है ना। इसका जो सर्कल है वो भी ड्रॉ करता हूं यहां पे, तो शायद विजुअलाइजेशन इंप्रूव हो। इसका जो सर्कल होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, ये है वो सर्कल, है ना। नहीं तो ये सिर्फ ग्रीन वाले सर्कल पे फोकस करो। तो बॉडी मान लो ऐसे जा रही है, इसमें बॉडी जा ऐसे रही है, ऐसा समझ लो, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होगी। तो क्लॉकवाइज घूमने के लिए बॉडी पे मान लो फोर्स ऐसा लगाया मैंने। अब उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक सेंटर की तरफ, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो ये वाला जो कंपोनेंट है फोर्स का, वो तो स्पीड इंक्रीज करने के काम आ रहा है, और जो ये वाला कंपोनेंट है एसी, अगर ये होगा ही नहीं तो बॉडी बॉडी सर्कल में घूम रही है बेसिकली। ऐसा सोचो कि एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी है नेगेटिव आई कैप डायरेक्शन में, ये वी वेक्टर है ना। तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगाते जा रहे हो कंटीन्यूअसली, तो बॉडी को घूमने की जरूरत क्या है, बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगी। तुम्हें एक्चुअली डायरेक्शन वेलोसिटी से परपेंडिकुलर थोड़ा तो लगाना ही पड़ेगा, सो दैट बॉडी चेंजेस द डायरेक्शन, और लगाए रखना पड़ेगा, और हमेशा लगाए रखना पड़ेगा, इज व्हाट वी आर सेइंग। एग्जैक्टली। तो तुम्हें कंटीन्यूअसली एक्चुअली जो तुम बोल रहे हो ना, वो वाला मोशन विल बी द लास्ट सेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। अभी हम सर्कल को हॉरिजॉन्टल मान के चल रहे हैं, अभी अभी वर्टिकल सर्कल का डिस्कशन नहीं हुआ है। हॉरिजॉन्टल सर्कल मतलब एक स्टोन को एक थ्रेड से कनेक्ट करते हो, तो थ्रेड हमेशा जो टेंशन फोर्स थ्रेड में डेवलप होगा, वो हमेशा थ्रेड के सेंटर की तरफ आएगा जहां तुमने पकड़ा हुआ है। तो बिकॉज ऑफ दैट बॉडी विल कंटिन्यू टू मूव इन द सर्कल। जैसे ही तुमने स्ट्रिंग को लूज किया तो सर्कल छूट जाएगा। नॉट मोस्ट, विदाउट दिस सर्कुलर मोशन डजंट हैपन। कोई और रैंडम पाथ हो जाएगा पर सर्कुलर नहीं हो, ठीक है। तो आज पेशेंट टूट गया, मैं इग्नोर कर देता हूं एक्चुअली। तो सारी चार्ट पढ़ नहीं सकता हूं ना, देन आई विल नॉट बी एबल टू टीच ओनली। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाई। तो मुझे जब जरूरत होती है तब मैं चार्ट जरूर करता हूं, ठीक है। चलो हैव अ बाय, गुड नाइट। जस्ट अ सेकंड पब्लिक, अरे यार, यस निहाल। हां, ऑब्वियसली गेट कनेक्टेड एज इन, दैट्स ओके, आउट ऑफ 300 राइट, दैट्स ओके, that's okay. See, the J vibration graph will not always be a straight line with a positive slope. It will actually be increasing, decreasing kind of graph. The thing is, you should be able to understand when you are preparing for a test. When you go to the test, you already should know that today I'm not prepared, I'm well prepared, I'm half prepared. If you are less prepared, don't expect miracle in the result. If you're half prepared, expect an average score in the test. If you are fully prepared, expect a good score. If out of this any contradiction happens, then it is something that you need to figure out that what is exactly happening. Means like if every time you're thinking that I'm fully prepared and then my scores are coming less, then somewhere there is a gap between your understanding and what actually that topic or that chapter or that subject is asking you to do. Which bit? Huh? I wish I could say something like what to do and what not to do. I'm not sure. 11th is something more of physical chemistry, right? You should speak to the who's teaching you guys. Harsh Maishal, sir. You should speak to sir. Yeah. You should speak to sir. He's an awesome and very patient person. He's an amazing teacher. You should speak to sir. How is he doing the class? Like you're talking to me right now. You ask, sir. That's why I want you to unmute me. I need to speak to you. And can you give me in the beginning only? You make your class teacher a request that sir, please forward this message to sir. Specifically only this message that sir, I want your 5 minutes at the end of the class. Can you give me? Specifically, if that message will come from the class teacher, then sir will also be able to see that highlighted message. Okay. Sometimes what happens when you type it in the chat, so many people are, everybody spams. So it is difficult to read the chats also. So when it comes from the class teacher, it highlights separately for the master teacher. See, about the other subject, I am actually not the right person to guide. That is why I'm saying that you should speak to the subject teacher. They are the right people to tell you how should you approach the subject. Less time on making the notes, less time in trying to read theory, more time in solving problems as much as you can. If you are getting say 2 hours for physics, you should not spend more than half an hour for understanding theory. 1.5 hours should go on problem solving. Doesn't matter how much you struggle in solving that problem. You should be making sure that I will struggle through this problem solving. This struggle is the part that will actually teach me physics. That struggle should not be skipped.
And when once you will start struggling through the problems, and when I say struggle through the problem, reading the question, oh, I don't understand this. Let's go to question number 2. That's not how I call it struggling. Reading the question, trying to understand what the question is trying to ask us, or what is it asking us to solve. Trying to understand the problems, the language, the understanding of the problem, the understanding of the situation. Trying to put it on the paper. Maybe try to draw the diagram if it is possible. Try to correlate it with the name of the chapter, the concepts that you have learned in the chapter. Try to hit and try. Try to do hit and try. So at least once you are struggling through a problem, struggle at least different 3 to 4 times in 3 to 4 different approaches. Maybe that approach, not all the approach will work with that problem, but next time when you will read another question where that approach which did not work here will be applicable. So you will directly be able to apply it because then you will have the understanding of this question also. And you understand what works here, what does not work here. Okay? That's okay. I've already given this idea that in questions when you're solving Tattva, you should not go in the order of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You should go in the order of 1, then 3, then 5, then 10, like that. In the test you're talking about. So in the test right now, you guys are not equipped to have that speed. That is the process of learning. That is, these tests are not to expect. We don't expect you to directly be JEE ready. You guys are not JEE ready yet. You guys are getting ready for JEE. Maybe some of the people they may have a background of foundation course or whatever. That's okay. You don't have to compare. That's one of the first fundamentals that I've taught to you. Everyone, compare you with yourself. That time has not yet come where you compare yourself with others. You should always compare first yourself with yourself. Look at your own performance every time. Do not compare with anybody, whatever be the rank. What you should, your first approach, which when you ask me the question that in the first test I got 190, then I got lesser marks. That is still a better comparison. That is the comparison that you should have. Okay, don't compare yourself with anyone else yet. Okay, take care. Bye bye. Yes, Nikhil. Potential energy versus X वाला ग्राफ होता था. हाँ 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 हाँ. एक मिनट. Elongation. ये U पोटेंशियल एनर्जी तो स्प्रिंग नहीं है. ये एनी पोटेंशियल एनर्जी है. ओके. ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, यूनिवर्सल ग्राफ है फॉर एनी पोटेंशियल एनर्जी. जैसे अब मैं समझाता हूँ. मान लो कि ये अर्थ है, ठीक है, और ये तुम हो. यहाँ इसलिए ऐसे बनाया क्योंकि मैं तुम्हें ऊपर नहीं, मैं तुम्हें यहाँ लेके जाऊंगा. जैसे जैसे तुम अर्थ से दूर जाओगे, ठीक है, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी. जैसे जैसे तुम अर्थ से दूर जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी. तो ये जो ग्राफ भी होता है ना, वो जो मैंने प्रॉपर ग्राफ बताया था, वो ग्राफ भी ऐसा कुछ था. ऐसा कुछ ग्राफ बनता है वो. जब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो इट एक्चुअली कम्स आउट टू बी अ ग्राफ व्हिच विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन द बॉडी. तो जब हम यार अगर तुम्हारा लोग स्पेसिफिक स्प्रिंग वाले फोर्स से है ना, स्प्रिंग वाली पोटेंशियल एनर्जी से, तो अपन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. ओके. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी? इट इज हाफ के एक्स स्क्वायर. करेक्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ पैराबोलिक ग्राफ. जब हम स्प्रिंग का एनर्जी ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इट सेज कि x इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी 0 या मिनिमम होनी चाहिए. तो ये जो ग्राफ मिलता है ना, दिस ग्राफ लुक्स लाइक दिस. दिस इज हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक. ऐसा, ये पैराबोला है बेसिकली. तो इसमें x की वैल्यू +1 पुट करो या -1 पुट करो, द वैल्यू ऑफ एनर्जी विल कम आउट टू बी सेम. ये देखो, यहाँ अगर 1 पुट किया या -1 पुट किया, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी k/2. पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू 0 इज 0, एट x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 विल कम आउट टू बी हाउ मच? 2 का स्क्वायर 4/2 इज 2, तो 2 क्या चाहिए. गेटिंग? सो दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ओके. ओके. ये सिद्धांत नींद आने लग जाती है. हाँ. तुम सुबह सुबह जब पढ़ते हो तो क्या आप थ्योरी पढ़ते हो या प्रॉब्लम सॉल्व करते हो? कौन सा सब्जेक्ट करते हो सुबह? और मैथ्स करते करते नहीं आती? ठीक है. ओके. तो प्रॉब्लम क्या है? दैट्स ओके. सिंपली तुम्हारा बॉडी क्लॉक मॉर्निंग में काम नहीं करता है. तुम ज़्यादा एक्टिव होते हो दिन में ना. एज लॉन्ग एज इनका कोई एक टाइम है जहाँ तुम 100% एक्टिव फील करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई दिक्कत नहीं है. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रात के 12-12 1 बजे तक पढ़ते हैं. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं. जैसे वो देखो विशेष लिखा है, विशेष ने चैट पे लिखा कि सर मैं रात के 3-4 बजे तक पढ़ता हूँ. तो कुछ लोग हैं जो रात में ज़्यादा एक्टिव फील करते हैं. कुछ लोग हैं जो सुबह. दैट्स ओके. मैं एक बात बोलूँ, ये टारगेट नहीं लेना चाहिए कि मैं आज, बेसिकली इट इज अबाउट सेटिंग अनरियलिस्टिक टारगेट. अगर तुम अनरियलिस्टिक टारगेट सेट करते हो, तुम्हें मालूम है कि हर बार जब तुम दिन में बैठते हो तो तुमसे 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 होते हैं, और तुम अगले दिन फिर भी अगर 70 क्वेश्चन का टारगेट ले रहे हो तो वो अनरियलिस्टिक है. वो डिमोरलाइज करेगा दोस्त. 40 का 45 सोचना इज रियलिस्टिक, लेकिन 40 का 70 सोचते हो तो वो डेफिनेटली अनरियलिस्टिक है. वो जरूर किया करो. वो जरूर किया करो. वो जरूर किया करो. उस पर टाइम मारो. क्यों नहीं होता है? टाइमर लगाओ ना. टाइमर लगाओ, अलार्म लगाओ. पढ़ते बैठो तो अलार्म लगा के बैठो. अरे सोचो भले. अगर तुमने सोचा कि सोचो, अगर तुमने सोचा कि 6 घंटे पढ़ने वाला हूँ और 6 घंटे में से 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा मैथ्स पढ़ने वाला हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है. तो जब पहला सब्जेक्ट पढ़ने बैठे उसी समय टाइमर लगा दिया. टाइमर जब लग रहा है, टाइमर जब चल रहा है, तो इससे तुम्हें 2 फायदे होंगे. एक तो कि जब टाइमर बजेगा तो आप कुछ भी हो गया, सब्जेक्ट चेंज करना है, कुछ भी हो रहा हो, ठीक है. लेकिन जब टाइमर चल रहा होगा ना तो दिमाग में ये भी चलेगा कि यार टाइमर में अभी 1 घंटा बचा है, तो स्पीड से करूंगा तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा. तो अपने आप छोड़ दोगे उस क्वेश्चन को, फालतू टाइम जा रहा है इस पे. गेटिंग? टाइमर रखो अपने सामने, रखो. और तुम मत सोचो, जब तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे ना सिद्धार्थ, तुम मत सोचो, जब प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे ना, अपने आप क्वेश्चंस तुम्हें सोचने के लिए वो काम कर रहे हैं. इसलिए सोचा क्वेश्चंस बनाए.
बहुत सारे टीचर्स जो हैं उन्होंने यही सोच सोच के क्वेश्चन क्रिएट किया, तो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, तुम क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, तुम अपने आप को रिपॉजिटरी बना रहे हो दिमाग में। अब पता है ना, अप्रोच बदल गई है, अब पता है ना, अप्रोच बदल चुकी है, बस that's it, उसी चीज पर करना है। ठीक है, ओके, चलो गाइस, टाइम टू से बाय बाय, 11 बजने आ गए। ठीक है, 11 बजेंगे अपने यहाँ सेशन एंड हो जाएगा। एनीवे, चलो देन, सी यू ऑल ऑन वेडनेसडे, बाय बाय, गुड नाइट गाइस, चलो साइनिंग ऑफ, बाय बाय।